video is from Hillsar English Medium School. Hello friends, till now we saw about different agricultural practices like preparation of soil and seed sowing, different implements used in that and the process. Then let's move towards the next agricultural practice, that is adding manure and fertilizer. मतलब क्या, खेत में fertilizer और manure add करना. But why we should do that? We know that again and again when we take a same production in a field, the whatever the soil, the nutrients are present, minerals are present, they get exhausted. The growing crop, it utilize or absorb it from the soil, but we have to replenish that nutrients again. That is done by manuring or adding fertilizer. Let us read that. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. Some supplies mineral nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of the plant. ये जो nutrients और the minerals हम देते हैं वो plant के growth के लिए बहुत important है. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. मतलब एक ही field में बार बार वही crop लेते जाते हैं farmer. The field is never left अनकल्टिवेटेड और फैलो. मतलब क्या, बैरन लैंड या जो फैलो लैंड रखते हैं ना, मतलब एक क्रॉप लेने के बाद थोड़े दिन राहत देना है फील्ड को, नहीं, वो एक के बाद एक लेते जाते हैं. Imagine what happens to the nutrients. Continuous farming of the crops makes the soil poorer in certain nutrients. क्योंकि जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट ले लेते हैं और देयर आर फ्यू क्रॉप्स दे आर नीडिंग वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मोर इन कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा क्वांटिटी में वो लगता है तो वो न्यूट्रिएंट exhaust हो जाता है. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrient. जो nutrient खत्म हो गया है उसको add करने के लिए हम manure add करते हैं soil में. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring result in the weak plant. अगर manure हमने बराबर से नहीं add किया तो plants को nutrient मिलेगा नहीं और plant जो grow होगा वो weak होगा, अच्छा strong नहीं होगा. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. What is manure? Manure क्या होता है? फील्ड में जो प्लांट और एनिमल वेस्ट निकलता है ना, जो लीव्स होते हैं, रिमेनिंग प्लांट मटेरियल होते हैं, एनिमल के जो वेस्ट होता है, काउडंग होता है, वो सबको यूज करके डिकम्पोज करके जो बनाते हैं हम उसे कंपोस्ट भी बोलते हैं. इन अदर वर्ड वी कॉल इट एज मैन्योर. These all waste they dump into a pit which is open place and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. ये जो decomposition का process है, decomposition means breakdown of a big complex organic material into the simple organic one. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned about the vermicomposting in earlier class. What is our vermicomposting? That is composting prepared by using earthworm. Earthworm को use करके जब हम decomposition का process करते हैं, जो animal plant waste को decompose करते हैं, cow dung को decompose करते हैं, we call it as vermicompost, which is one of the good quality of manure. One of the activities given activity 1.2. You have to take मूंग और ग्राम सीड्स, उसको वाटर में सोक करके रखना है so that it will germinate. After germination, it will form a small seedling with the 2 or 3 leaves it gave. और ये जो seedling है वो हमें transplant करना है. किस में transplant करने? For that we will be taking 3 cup, 3 plastic, or you can take a thermocol cup or any paper cup. Name them A, B. See, it is given in the picture, you can observe. In all three container, add equal volume of equal quantity of soil. In A cup, along with the soil, we have to add cow dung manure. Cow dung जो होता है ना वो ऐड करना है. B में क्या ऐड करना है? केमिकल फर्टिलाइजर जिसका नाम है यूरिया ऐड करना. एंड इन C we will add keep only soil, no need to add any manure fertilizer. And in all three container will be keeping a good seedling.
Now water them regularly and observe them 7 to 10 days. You can see in the picture that the growth of the crops in each 3 beaker. C crop में बहुत कम growth देख रही है, then A crop में थोड़ी सी है, and B shows the much more profuse growth. Let's move ahead. Did all the plants in all the glasses grow at the same pace? मतलब क्या सारे जो प्लांट ग्रो हुए हैं बीकर में या कंटेनर में एक जैसे ग्रो हुए हैं क्या? Which glass shows better growth of the plant? It is but obvious. The glass B shows the much more profuse growth. बहुत अच्छी growth दिख रही है ना? In which beaker was the growth fastest? Fertilizers are chemical substances which are rich in a particular nutrient. जैसे कि मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फर्टिलाइजर कैसे है? केमिकल सब्सटेंस है जो केमिकली बेस्ड है, जो बड़े बड़े कंपनी में बनते हैं, जिसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है. हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर? क्या डिफरेंसेस, बेसिक डिफरेंस है दोनों में? फर्टिलाइजर्स दे आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potassium. NPK. What is the full form of NPK? N stands for nitrogen, P stands for phosphorus, and K stands for potassium. So that is NPK. These three are the basic nutrient plants needed. The use of the fertilizers has helped farmers to get better yield of क्रॉप्स. फर्टिलाइजर यूज करने से क्या हुआ है, जो बहुत बेटर यील्ड मतलब कि प्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रोडक्शन मिला है, सच एज wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. अगर प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा है इसलिए अगर हम भर भर के फर्टिलाइजर डाल रहे हैं फील्ड में तो क्या हो रहा है, जो क्वालिटी है हमारे ज़मीन की वो खराब होते जा रही है. The farmers fertilizers have also become a source of water pollution. फर्टिलाइजर ज़्यादा डालने की वजह से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर हम ज़्यादा डालते हैं पानी में मिक्स हो जाते हैं एंड दैट वाटर गेट एब्जॉर्ब इन द सॉइल एंड फाइनली इट गोज रन्स इनटू द वाटर अंडरग्राउंड वाटर टेबल लेवल. वाटर टेबल जो होता है ना पानी ज़मीन के नीचे उसमें जाके ऐड हो जाता है. दैट इज़ हाउ इट does the water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil की fertility अगर हमें maintain रखनी है, अच्छी रखनी है, we have to use substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated or the fallow in between two crops. फर्टिलाइजर डालने से अच्छा है ऑर्गेनिक मैन्योर डालो, क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर के कोई भी साइड इफेक्ट्स है नहीं. या फिर यू कीप द दैट फील्ड अनकल्टिवेटेड मतलब वो फील्ड के ऊपर कुछ भी नहीं लगाना है, थोड़ी दिन के लिए, फॉर फ्यू मंथ्स और फॉर फ्यू सीजन कीप इट एज इट इज. द यूज ऑफ मैन्योर improves the soil texture as well as its water retaining capacity. That is most important. That is one of the big advantage of manure. वो तो soil की quality अच्छा करता ही है, but it also improves its texture. Texture जो है, जो soil का texture होना चाहिए वो improve होता है. Along with that, soil की water remaining और water holding capacity होती है वो बढ़ाता है, ताकि क्या हो, जो हम soil में पानी डालें वो soil पकड़ के रखे. नहीं तो क्या होता है, ज़मीन से पानी जल्दी सूख जाता है और जो लैंड है जल्दी ड्राई अप हो जाती है. एंड ऑल्सो मैन्योर रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स. जैसे कि और केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो एक ही पर्टिकुलर या फिर दो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ऐड हो जाते हैं, बट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में मैन्योर में ऐसा है नहीं. ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट इट गिव्स टू द सॉइल. Another method of replenishing the soil with a nutrient is through crop rotation. That is, other technique is crop rotation. What we does in this technique? This can be done by growing different crop alternately. जैसे कि फार्मर पहले वीट क्रॉप लगाए तो सेकेंड भी वीट क्रॉप ना ले. वीट क्रॉप के बाद they can take any leguminous crop, जैसे कि पल्सेस है, दालें है, उनके क्रॉप वो ले सकते हैं. एंड देन इन द नेक्स्ट सीजन they can again plant wheat, take the wheat crop.
The farmers in northern India used to grow legumes as the legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replenishment of the soil with nitrogen. You must be knowing that the leguminous plant in its root nodule they are having one bacteria. What is the name of that bacteria? Rhizobium. It does the प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसकी वजह से क्या होता है इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन and that is converted into such form of nitrogen which can be absorbed by the soil and make it available to the roots of the growing crop. In the previous classes, you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of the roots of leguminous प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं जो दालें होती है उनके प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स में क्या होता है एक नोड्यूल्स होता है हम गांठ बोलते हैं उसके अंदर ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया वो रहते हैं दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. So in the given table, it is given the differences between the fertilizer and manure. We'll see one by one. Fertilizer is an inorganic salt, while the manure is in organic in nature, which is obtained by the decomposition of cow dung or the cattle dung, human waste and प्लांट रेसिड्यूज प्लांट के जो बचा कुचा है उससे हम मैन्योर बनाते हैं और फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज में बनाते हैं फर्टिलाइजर वेल द मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड इटसेल्फ. A fertilizer does not provide any humus to the soil, where the manure provides lots of humus to the soil. Fertilizers they are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, and potassium. These are the three main nutrients the plant need in more concentration, while the manure is relatively less rich in the plant nutrient. They are having many different kinds of nutrient, but the concentration of these nutrients are very low in manure. Now let us see the advantages of manure. The organic manure is considered better than the fertilizer. Why? क्यों हमें organic fertilizer बहुत अच्छे होते हैं जो chemical organic manure अच्छे होते हैं fertilizer से. Let us see. It enhances the water holding capacity of the soil. I already told you that जैसे हम organic fertilizer add कर और organic manure add करते हैं soil में soil का texture change हो जाता है और it gives more porosity to the soil जिसकी वजह से it can hold more and more water at a time. It makes the soil porous due to which enhances the gases becomes easy और द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी. सॉइल की पोरोसिटी बढ़ती है सॉइल में पोर्स इंक्रीज हो जाते हैं पोर्स मतलब होल्स जिसकी वजह से इन दैट होल्स इट कैन स्टोर मोर एंड मोर गैसेस सो जिसमें से ऑक्सीजन जो है रूट्स को मिलेगा. इट increases the number of friendly microorganisms जो सॉइल में अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका नंबर वो बढ़ाता है. इट improves the texture of the soil soil's texture it improves. Here we end up with this part. Your homework is to write the differences between fertilizer and manure and try to write the different hard words present in the lesson and learn it. Further agriculture practices we'll see in the part 5.